Ma'am, yesterday you told that you will switch on your camera. Ma'am, you are muted. Namaste, ma'am. Namaste. Good morning, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Can you hear me? Ma'am. Yes, ma'am, we can clearly hear you, but your voice is a little bit low. That is basically because of the connectivity issue. It will be okay soon. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Taking. Just a minute. Ma'am, your voice Get ready with all the stuff, guys. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, we can't see you. 5 o'clock. Wait. Another 5 minutes. You guys are. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, is this black marker okay? कल वाली हार ने दिल तोड़ दिया नया दिन आज भी फोकस Good evening, everyone. Another 2-3 minutes. Good, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Enjoy the music. Enjoy music. Ma'am, I can't see you. Her video is off. At 5 o'clock, she will on. She told. Ma'am, I can't see you. I can see you all. Yes, ma'am, you are visible. I can see you all. Enjoy the music. Ma'am, you are live on. Enjoy the music.
We're just going to start. Just enjoy. Hi, Jasmine, ma'am. Hi, Fazia. Ma'am, we could begin when we hit around 50 participants. So we Good evening, ma'am. So yes, we can just start our session. I thought I should begin the session with music. Music हमेशा कुछ ना कुछ कमाल करता है. So let's have a beautiful song from Disney movie and let's enjoy first. I think, ma'am, you have been muted. Can you unmute yourself, please? Let me just ask you to unmute. I'm on mute. Is it fine? Perfect. Yes. Let's start our session with smiles and some lovely music from Disney movie. Okay. So because why Disney movie? Because we are going to create a fantasy character today. Okay. So let me play a song for you. Let's enjoy this song. It's very nice. Just relax, enjoy the music. Get your things. Keep your things with you. Get your scissors, get your glue. And then we are just going to begin our session. It's crystal clear. I'm where I'm meant to go. Once I see the light, it's like the boat is lifted. And at last I see the light. It's like the sky is blue. I'm just world is somehow shifted. All at once, everything is different. Now that I see. You know, everything is different, kids, when I see you. It was a lovely, lovely, beautiful song. And same goes for me. Whenever I see you, it's always beautiful. I feel so happy. I feel so good. And whose birthday? Who wrote that I feel very happy? I didn't know the name, but yes, we can just wish our friend happy birthday. Okay, Yashas. Yes, Yashas. Happy birthday. May God bless you. And it's again a beautiful day. Pleasant weather, little cold here. You can see me. I am feeling a little cold, but I'm happy to be with you all. Yes. So we have to create a fantasy character today. So sometimes we like to go back to our childhood. हमें अच्छा लगता है ना बचपन में जाना, कहानियां सुनना और सबका एक फैंटेसी कैरेक्टर होता है ना? So I thought let's make something very interesting which you can hang also, and that fantasy character is unicorn. Everyone loves unicorn. You must have seen movies. You must have heard their stories. Even I enjoy. So my favorite unicorn is from one of the movies is Sparkle. I really like Sparkle. Okay, so you can create your own character. So I'm just going to start the class. And before I start my class, let me tell you what are the things we need for the class.
So I have few white sheets here. You can take brown paper bag also. See, I try to collect paper bags so that I can reuse. Okay, so one is here. As I always say, I do believe in recycling. So I have white sheets, I have brown paper, and yes, I have got some new colorful A3 size sheets. Let me take out from the bag this transparent bag and show you all lovely pretty color. सोचो यूनिकॉर्न ऐसे कलर्स का हो, है ना? कितने सुंदर सुंदर कलर्स. Wow. See, lovely. I like these colors. Okay, so small kids can, you know, take help of their mama and papa. और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, वो खुद अपना काम करें. Is it clear? I couldn't come clean my table yesterday. I had work, so I just ran and came. So just to meet you and just to create a beautiful, fancy character. So just one simple, humble request to everyone. Try not to interrupt. If you have anything, write in the chat box. We can read. If something is really, really bothering you or is important, then only raise your hands, right? And once again, from my side and from everyone and from podium side, happy birthday, Yashas. Okay, so before I start, let me wear my glasses so that I can see you clearly. So if you don't have paper bag, it's okay. I just said I collect. I didn't say that you need to have a paper bag. Okay, try to follow the instructions. Listen to the teacher very carefully because there are few things we need to listen. Listening is very, very important. Okay. If you don't have color sheets, no need to be upset. Use newspaper, use magazine, whatever. Please don't write all these things because I think at one age, जैसे हम पार्टी में जाते हैं, तो मम्मा बोलती है ना ये रेड वाली शर्ट पहनो, हम बोलते हैं नहीं, मुझे तो ब्लू ही पहननी है. हम अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं ना कभी कभी. ऐसे ही थोड़ा सा हम ध्यान लगाएंगे. अगर कलरफुल शीट्स नहीं है, so we can have newspaper, magazine sheets, brown paper, black paper, any paper. Okay, so let's get start. So you can take any color, okay, color sheet, but I'm going to take three white sheets. Okay, I thought let me make my unicorn white color and I'm going to add colors to my unicorn. So it's a fantasy character. You can name your unicorn later on. And where is my clipboard so that I can show you? Great. So it's here with me. So I'll just show you what I'm going to do. आप कोई भी कलर की शीट ले सकते हैं. मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप 3 different sheets ले सकते हो. न्यूज़पेपर ले सकते हो, ब्राउन पेपर ले सकते हो, सेम कलर की शीट ले सकते हो, नोटबुक की शीट ले सकते हो, सेम शीट ले सकते हो. उसके बाद एक हम सर्कुलर कुछ भी लेंगे टू मेक अ सर्कल. यू कैन यूज कंपास, यू कैन यूज बैंगल, बहुत छोटी हो जाएगी. यू कैन यूज अ बॉल, यू कैन यूज एनीथिंग of your choice. So here is my marker and I'm going to make a outline. So it's done. Lovely. So I have a big circle and there are 3 sheets. There are no measurement. Please don't ask me this question. Okay, there is no measurement. We are not doing maths. We are making an interesting craft. It is your choice. आपने कितना बड़ा unicorn बनाना है, आप उतना बड़ा circle बनाएंगे. Is it clear? Can I see lots of smiles, lots of thumbs up? So
I have taken 3 sheets, white color sheet. You can take colorful sheets. You can take newspaper, brown paper, any paper. And I have made a big circle. You can take, I don't understand, या तो मेरे को लगता है मैं कोई और लैंग्वेज में बोलती हूँ, है ना, बड़ा में जो बच्चों को समझ ही नहीं आती. I said you can take any sheet. Any means any size, any shape. मेरे को लगता है मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो गई है, मुझे कुछ और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना, इसीलिए. Now the next step is I'm going to cut these circles. Okay, I'm repeating once again, and last time I took 3 white sheets. You can take newspaper sheet, you can take papers, you can take colored paper, same color or different colors. Make a circle of your choice. जितना बड़ा आपने यूनिकॉर्न बनाना है और जो सर्कल आपके पेपर में फिट आए. Now, where is my pair of scissors? So my scissors are here, and slowly I'm going to cut these. I'm going to cut these circles. To handle your scissors carefully. Okay, and I'm going to show you soon. Okay, अब don't ask me कि मैम 3 सर्कल बनाए तो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे ना. 3 शीट्स ली थी. 1, 2 and 3. So 1, 2 and 3. ये सर्कल लेने के बाद हम इसे सेमी सर्कल बनाएंगे. I hope everyone knows what is a semi circle. It's a circle and then it's a semicircle. So I'm going to make semicircle from all the sheets. So 1 semicircle, 2 semicircles, and the third one is with me. I'm going to fold it and अच्छे से press करेंगे. So I've got 3 semicircles from 3 circles. If you have done till here, please thumbs up, smileys, and थोड़ा सा ठंडा मौसम है, कुछ मेरे लिए सूप भेजेंगे. आई जल्दी से ढूंढो कोई सूप है वहां पे या कोई ग्रीन टी पिला दे. I am waiting. Don't worry. Can I get smileys? Can I get? जल्दी से भेजो ग्रीन टी, दिशिता. Thank you, Rashmita. I think I need to have that green tea and spinach soup. Yes. Send Dishita, you sending it to me for soup. I'm very far. Where do you stay, Dishita? So many bowls. Thank you. Thank you. Now, the next step is thank you. Tamil Nadu. I'm very, very far from you. So now I'm going to stick. So I'm on the one side, I'm going to paste Fevicol. I'm very far, don't worry. I'm in the capital city. Okay, so I'm going to put Fevicol on the borders. Yes, Kanika Bedi. मैंने ये फेविकॉल लगा दी है और मैं अपना दूसरा सर्कल इसके साथ में चिपकाने वाली हूं, लाइक दिस. Okay, I'm repeating.
I'm repeating. Okay, those who have joined abhi, so let me explain once more and last time. I took 3 sheets. आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो. Okay, so आप कोई भी कलर की शीट लोगे और हम सेम कलर का सर्कल बनाएंगे, कोई भी साइज का. So I have this. I'm going to keep it here and I am just doing the outlining. Okay. Now the next step is quick recap. I'm just using my pair of scissors and I'm cutting it. You can use same color, different color. I think children, we are going to need one more circle. Okay, तब तक आप एक और circle same size का काट लीजिए. So that means we need 4 circles. Okay. उसके बाद हमने इसको semi circle बना दिया. So I made semi circle. Okay. Another semicircle. Those who joined late, it's fine. अभी क्या करना है हमें? यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे. I'm just putting फेविकॉल here and I'm going to join it. जो हमने काटा है circles, अभी मेरे पास अच्छे से join करेंगे, okay? ताकि वो निकले ना. मेरे पास सर्कल था. बेटा अगर मैं यही रिपीट करती रह जाऊंगी हमारा यूनिकॉर्न तो उड़ जाएगा विंग्स लगा के. थैंक यू कनिका बेदी, थैंक यू. इवन आई good. I'm happy you like my class. So now I've got 2 circles here and 2 semicircles here. Okay, अभी मैं क्या करने वाली हूँ? इन दोनों को join करने वाली हूँ. I'm repeating. I have 1, 2 यहाँ जोड़े थे, 2 मैंने यहाँ जोड़ लिए, and quickly I'm going to stick these together. Okay, so I'm going to join it like this, like a ball. आप और भी लगा सकते हो, so it's like a ball. You can make a hanging like this. Okay. It's like a ball. So I've taken 4 sheets. 3 के साथ ऐसे ball अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने 4 ले लिया. आप 6 ले सकते हो, आप 8 ले सकते हो. Okay, I didn't know if unicorn have wings, it's called alicorn, right? Thank you. Thank you for sharing, kids. So this will be the body of the unicorn. So you have to be really careful because we are making a fantasy character, a hanging. जो बड़े बच्चे हैं वो ज्यादा ऐसे बना के लगा सकते हैं. This is also called a paper ball. Okay, Pegasus, it's called. Let me read and I'll get back to you. मेरे को भी नहीं पता. I'll get back to you. Okay. Now I'm going to keep this aside. मैं इसको side में रख रही हूँ. Now you can take same white color or you can take any other color of your choice. Okay. After sticking and making the ball, the next step is, if you want to use white sheet again, I am happy that you want to use white sheet. If you don't want to use white sheet, then don't make. Okay. So हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सर्कल कट किए, 4 सर्कल, उनको सेमी सर्कल बनाया और उसको स्टिक कर दिया.
Yes, we can use a newspaper also. So those who joined late, let me tell you, कोई भी आप 4 सर्कल कट करोगे, मैं छोटा सा करके दिखा रही हूँ, and this is the last time I am doing it. So if you join late, kids, this is not my problem. You have to be on time. If it says 5, you can't just come and at 5:15 you telling me repeat, because other children, they get disturbed. Please, let's respect the class. There are few rules. You can't just come and just keep on typing the things. You have to be on time. So हमने 4 सर्कल लिए और उसको ऐसे सेमी सर्कल बना के ज्वाइन कर दिया फेविकॉल से. आप 3 भी ले सकते हो, ऐसे. ओके, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो. All up to you. Please, let's move to next step. Otherwise, मैं यही बना के छोड़ देती हूँ. आप 6 ले सकते हो, आप 8 ले सकते हो, कोई भी इवन नंबर के सर्कल्स कट करके ऐसे बॉल्स बना सकते हो. तो I have taken 4 सर्कल्स और ज्वाइन कर दिया. अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ ताकि ये मेरा जो है यूनिकॉर्न की बॉडी खराब ना हो. अब मैं क्या करने वाली हूँ, यूनिकॉर्न का फेस बनाऊंगी. So let me take some other color for the face. How about yellow color, the light lemon color? Wow, I like these pastel colors. So I have this big lemon color sheet and I'm going to draw the face. See children, I'm not going to repeat the face. You need to follow it. Okay? Please take a sheet, another sheet, or draw it on a paper. बाद में उसे नीट कर लेना. सबसे पहले हम फेस बनाने के लिए यूनिकॉर्न का ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके यूनिकॉर्न की बॉडी कौन से कलर की है. ओके, कितने साइज की भी है. ओके, ये दोनों बातें आपने खुद ध्यान रखना है. मेरी जो ये सर्कुलर बॉडी है बड़ी है, तो मैं फेस बड़ा बनाऊंगी. अगर आपकी बॉडी छोटी है यूनिकॉर्न की, तो आप छोटा. प्लीज डोंट राइट दीज थिंग्स दैट यू डोंट हैव कलर्ड शीट्स. प्लीज यूज. इफ यू डोंट हैव, आई कांट कम एंड गिव इट टू यू ना बेटा. You have to look around what things you can take. Sometimes you don't have to ask. So, अगर हमारी बॉडी यूनिकॉर्न की इतनी बड़ी है, अगर आपने बड़ी बॉल बनाई है तो फेस बड़ा बनेगा. अगर आपने छोटा सा बनाया है बॉल तो छोटा फेस बनेगा. तो अब मैं यूनिकॉर्न का फेस, यूनिकॉर्न फेस इज जस्ट लाइक अ हॉर्स. ओके, यूनिकॉर्न का जो फेस है वो बिल्कुल हॉर्स की तरह है. तो हम कैसे बनाएंगे? आई एम गोइंग टू मेक अ वेवी लाइक दिस, अ वेव लाइन. आई एम वेटिंग फॉर यू. I have made a wave. थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे. आई एम रिपीटिंग. हमारी जो यूनिकॉर्न की आप लोगों की बॉडी बनाई है उसका हमें साइज लेना है. ठीक है, अगर तो वो छोटी सी है, आप बड़ा फेस नहीं लगा सकते, और अगर बड़ा है तो छोटा फेस नहीं लगा सकते. तो ये हमें यहां से सोचना है. ओके, ग्रेट. एंड देन ऑन द अदर शीट we are going to make a wave like this. I hope it's clear. I'm not getting smileys. When I don't get smileys, मुझे लगता है पता नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं. Can I get smileys? कुछ समझ आ रहा है कि? Thank you, very good. Yes, lots of smiles. Yes, thank you. Can anybody send me a horse? Can you look horse or a unicorn in the icon? Yes, you can see unicorn. Lots of unicorns coming. तो अब हम
जो भी स्माइलीज मैम मांगेंगी सब बच्चे यूनिकॉर्न भेजेंगे और यूनिकॉर्न का फेस आराम से देख सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. Oh, lovely. So many unicorns. Now stop, stop, stop. नहीं तो मैं ही यूनिकॉर्न में बैठ के चली जाऊंगी. ठीक है, मैं चली जाऊंगी यूनिकॉर्न में बैठ के. Okay. Now the next step is we have to complete the face. Now what is my next step? Yes, you can use 5 semicircles also. Now I'm going to make a round like this till here. Okay, I made a wave because मेरा यूनिकॉर्न की बॉडी बड़ी है तो मैं थोड़ा सा बड़ा फेस बना रही हूँ. मैंने एक वेव बनाई थी, उसके बाद मैंने ऐसे कर्व को घुमा दिया. घुमाने के बाद मैंने क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ लाइन, अ लॉन्ग स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम बोथ द साइड्स like this. And you can join it so that you know we have to cut. Okay, again I am repeating, it's a wave and 2 slanting lines. Very simple. Now for the face of the unicorn, just make like this, a curve line and a curve line again. Okay, now my unicorn is little shy. थोड़ा सा shy है तो उसकी eyes बंद है. So just add eyelashes. Like this. Now ears and horns are missing. So first let me cut this. Okay, I'm going to use some other color for ear or maybe the same color. I have little dark yellow and a horn. वो मैं अभी सिखाऊंगी. तब तक आप सारे बच्चे कटिंग करेंगे. So here is my pair of scissors and here I go. So I enjoy being with you, you know, children. But when you get questions, मैम ये शीट नहीं है, हम ऐसे कर लें, कलर नहीं है, फिर थोड़ा सा मैम को लगता है या तो मैम ठीक से नहीं बता रही या समझ नहीं आ रहा. Be confident. You are very smart kids. Don't worry about that. और जो बोलते हैं ना मैम शीट नहीं है, कलर नहीं है, तो भैया मैं कहाँ से देने आऊंगी. थोड़ा सोच लिया करो ना मैम के बारे में. Yes, I know. Even I enjoy जो तुम चैट भेजते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. And I really enjoy that. See, we can't meet each other. We can't see one-to-one, but it's a beautiful way of interaction. People from different states, and we are here meeting thanks to Podium. So, I am just about to finish my cutting. And you know what, children? You can do on the both sides also. अगर आपको लगता है क्योंकि हम both side मेरा unicorn देखे तो आप both side भी कर सकते हो. So I am going to do both the sides. One is this and the other is the same way. I'm going to outline first. On both the sides. And again I am going to join it. हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था, इसको ऐसे किया था और एक बड़ी सुंदर सी इसकी, क्योंकि मेरा यूनिकॉर्न थोड़ा सा शाय है. So from both the sides, my unicorn is ready. Now I'm going to add ear first. पहले कान, ताकि वो मेरी बात तो सुने. अरे मैंने कैप का रख दिया. तुम्हारे साथ ऐसे होता है कि कभी कभी तुम चीज कहीं रख देते हो फिर मिलती नहीं है. So let me take, है ना, होता है ना. So
I have little darker yellow here. So I'm going to cut little bit. Jitni meko ear banana hai, and ear is a leaf shape. Always remember, ear is a leaf shape. So I'm just going to make a leaf, just one. Okay. And I'm going to make a leaf shape. So, wow, this is really fun. And I have thought about the name of my unicorn also, which I'm going to tell you at the end of the class. तुम भी सब बच्चे अपने यूनिकॉर्न का नाम सोचेंगे और फिर चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे. अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. अभी नहीं, अभी पहले हम सब ध्यान से देखेंगे. So this is the leaf shape and outline from both the sides. Okay. And you can also add like this, just a curve line on both the sides. Okay. Just the, let me clear the pine table. आज मेरी मम्मा मुझे खूब गुस्सा करने वाली हैं क्योंकि मैंने अपना टेबल क्लियर नहीं किया है. I was feeling little lazy. Okay, anyways. So I'm going to stick my ear here, not my. अपना निकाल के नहीं लगाऊंगी. ऐसे लगाऊं, या आप decide करेंगे. I think I should use my ear like this. Okay, little here like this. So from both the side, it will look cute. So I'm using magic glue here. अरे निकल जा. वो भी सोच रही है, अरे तुम कितना मुझे तंग करते हो, कैप भी नहीं लगाते और मैं सूख जाती हूँ. So be careful about your things. So ear is done. Ear is done. Let me have like this. So my unicorn is little shy. And now horn. So which color should I use? I think I should use yellow color or some other color. Kids, jaldi se likho. Different ki yellow. I have this color also. I have this. Abhi main ye use karungi. Okay. Pink. Itne sare pink. Chalo, theek hai. Let me use pink. Girls hongi jo pink, pink, pink bol rahi hai na? I know that. So I'm using, I have pink sheet. So मुझे जितनी sheet चाहिए मैं सारी waste नहीं करूंगी. So I'm just taking bit of paper and I'm going to make a big triangle for the horn. Like this. Just join it. Okay. Make a horn for the horn and let's add few lines like these. You can use some different color also, kids. Okay. आप कुछ भी बना सकते हो. मुझे पोडियम के पेज पे सुंदर सुंदर चाहिए यूनिकॉर्न्स और ऐसे. I have seen your pictures. You know, I can just a suggestion. Whenever you are clicking your picture, try to look for the, you know, yes, it's looking like a carrot. Absolutely, a pink carrot. So try to use the background which is plain और या कहीं planters हो ताकि आपकी पिक्चर सुंदर आए. नहीं तो कईयों के बैकग्राउंड ऐसे होते हैं ना, पिक्चर नहीं समझ आती. Try to have a plain background or a planter. Just a suggestion. कोई जरूरी नहीं है. Okay, just a suggestion. So I'm going to cut this, the horn of my unicorn, because I'm going to do from the both the side. So horn is here and I'm going to do the outlining here.
on the back side also. Wow, it's really good, fun that I'm going to create my own unicorn. You can use golden, silver, whatever things you have at home. No need to tell me. Okay, so it's always good to see that क्या बच्चे नई नई चीजें करते हैं. अब मैं अपना जो हॉर्न है यूनिकॉर्न का ऐसे पीछे से लगाऊंगी. ऐसे लगा दो, चाहे आगे से लगा दो, कोई भी साइड आप लगा सकते हो, वो दिखेगा. Okay, so I'm putting this like this. Okay, unicorn ka horn. So let me have Fevicol here. वो दोनों साइड से नजर आएगा. कैसे भी लगा लो, वो दोनों साइड से आएगा. इधर से भी और इधर से. See, हमें करने की जरूरत नहीं है. मेरा फेस रेडी है, मेरा नहीं, यूनिकॉर्न का. ओके, और मेरी इसकी बॉडी रेडी है, तो मैं कहाँ लगाऊंगी? आप कहीं पे भी यूनिकॉर्न के ऐसे लगा सकते हो. ओके, कहीं पे भी प्लेसमेंट कर सकते हो. और अगर किसी बच्चे का ये पेपर सेंटर का खुलता है तो हम वहां पे भी लगा सकते हो, लेकिन फटना नहीं चाहिए. सी, अगर आपका खुलता है सेंटर का, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, यू डोंट हैव टू टीयर इट. जैसे मैंने यहाँ पे फेविकॉल कम लगाई थी. I am so funny. मतलब, what is funny? Should I take it as a compliment or should I cry? परिनिया, जल्दी से फनी का मतलब बता दो भैया. Who is looking cute, ma'am or my this thing, unicorn? So I'm going to stick here, okay, my unicorn. Ma'am, you, thank you. Okay, so I'm going to stick like this. Thank you, Dishita. So मेरा unicorn का face तैयार है. It's like this. और अगर आपको लग रहा है, देखो जैसे ये ढीला ढीला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसका थोड़ा सा फेस भी दोनों चीजें करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि वो बैलेंस हो जाए. ओके, लाइक दिस. सी, एंड यू नो इट डिपेंड्स ऑन पेपर ऑल्सो, क्या हमारा पेपर पतला है या मोटा है, कैसा है. नाउ समथिंग इज मिसिंग. लेट्स मेक इट्स 4 legs. तो मैंने जो बॉडी ली है वो लेमन येलो कलर की ली है, तो मैं 4 रेक्टेंगल्स कट करूंगी. और मुझे ऐसे लगता है मेरे को रेक्टेंगल्स बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को रेक्टेंगल कट करना आना चाहिए. लाइक दिस. आई विल जस्ट शो यू. थैंक यू. आई एम सो क्यूट. सो 4 rectangles I am going to cut. So rectangles मैं नहीं बना के दिखाऊंगी. प्लीज मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैम हाउ, बिकॉज इतनी पोडियम ने क्लासेस कराई है, इतना सारा कराया है. So Kanika is asking why so cute. I have to ask my mom, and today I'm going to ask her why so cute. Okay. Okay, great. I have to ask my mother why is so cute. Okay. So now these are 4 rectangles. अब ये कैसे, कितना साइज? शुक्र है किसी ने ये नहीं पूछा कितना साइज. वो देखो देवेशी पूछ रही है हाउ मेनी, 4. ओके, तो हम जितनी आपको मोटी लेग बनानी है अपनी यूनिकॉर्न की, ये नहीं कि यूनिकॉर्न तो मोटा सा है उसकी टांगे सुकड़ी सी है, ऐसा होता है सेम साइज का, ये अब हम सोचेंगे. दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. So these, my legs are ready, not my unicorn's legs are ready. And now what you can do is you can make black line here or any other color. So I'm going to make 2 lines like this on both the sides. I'll just show you what I'm doing. And legs lambi hai, so like this.
I'm going to turn it. आप इसको कलर भी कर सकते हो. ओके, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम कलर भी करके देंगे. ओके, so second leg, because we need to add tail, we need to add wings. Do we need to add wings? So quickly we have to finish this session. Okay, and 4 legs are ready. So जो हम बनाते जा रहे हैं हम साथ साथ स्टिक करते जाएंगे, क्योंकि अगर हमने स्टिक नहीं किया तो फिर हमारा यूनिकॉर्न तो भैया उड़ नहीं पाएगा या हम उसके साथ खेल नहीं पाएंगे. ओके, so 4 legs on the 4 sides. How I'm going to stick my 4 legs? 1 like this. आपने सीधी लगानी है, सीधी लगा सकते हो, टेढ़ी लगानी है, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लगाऊं. वो एक ऐड आती थी ना, टेढ़ा है पर मेरा है, तो ऐसे ही टेढ़ा है पर मेरा है. ओके, so I'm going to put 1 and the second one. 2 legs are ready, and on the back side of my unicorn again 2 legs. Okay, okay, great. I'm liking this unicorn actually. आप ऐसे हॉर्स बना सकते हो, डंकी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो. So see, super cute. Now I'm going to add tail for my unicorn. ठीक है, super super cute. यहाँ आप thread लगाओगे और hang करोगे. Okay, or you can have here like this. Okay, so let me make tail for my horse, or not horse, unicorn. So I'm taking yellow color here, and horse की tail, unicorn की tail सब same होती है. तो tail कैसे बनाएंगे? Like this, S की तरह, ऐसे जैसे गर्ल्स के बाल होते हैं और उसको डबल कर लेंगे. सॉरी, ऐसे डबल कर, not this. Okay, it's big no. So it's a tail like this. You can add lines in the tail. You can put wool, you can put cotton. We will talk about it, where to use these things. Okay, आज मुझे खूब डांट पड़ने वाली है. मेरा actually table is really a mess. So my mama is not going to give me dinner. So please मुझे कुछ खिलाते रहो ना, भेज दो. So I'm going to cut this tail. और मैं इसको थोड़ा interesting करूंगी. See, you just have to stick anywhere like this. Simple sticking and 4 legs. कितनी सारी चीजें नितिन ने भेज दी. Thank you, Nitin. You are taking care of me. So पीछे से भी मैं ऐसे ही करूंगी जैसे हमने आगे से आउटलाइन की है. Yes, like this. Okay. Now tail is ready. आप इसको कट, मैं सारी चीजें बता रही हूँ. आप सिंपल टेल भी ले सकते हो, मैं आप कट करके बता रही हूँ. आई एम रिपीटिंग सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम. ओके, एक टेल हम ऐसे लगेंगे और उसको हम कट भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लाइक दिस, ऐसे वेवी फॉर्म में. और आपके घर में अगर पेपर है, पेंसिल है, पेन है, तो उसको रोल भी करेंगे. रोली पोली रोली, ताकि वो टेल ऐसे हो जाएगी, रोली रोली रोली. ओके, रोली पोली रोली, and very nice. Tail is ready, and rock and roll. So I'm going to put the tail here on the unicorn. Super super cute.
Wow, ma'am, today my mom made dosa. Which dosa? I really like dosa. So आप tail को थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे because it's winters. So थोड़ा सा time लगेगा. आप staple भी कर सकते हो. मैं जल्दी से दिखाने के लिए staple करूंगी. और मेरा unicorn is ready, but something is missing. See, you can create your unicorns like this. You can अगर किसी को बर्थडे है तो मैं धीरे से बता रही हूँ. यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो सब अच्छी राइटिंग में, गंदी गंदी राइटिंग में. अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा आइडिया नहीं दे रही. अब अगर आपके पास कॉटन है, आई हैव दीज कॉटन बॉल्स, आप उसको ऐसे कर सकते हो. दोनों बताऊंगी. और अपने यूनिकॉर्न के इधर बाल लगा सकते हैं लाइक दिस. I'm just telling you, you can put cotton like this. If you don't have, it's okay. जिन बच्चों के पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो ऐसे डिफरेंट कलर की पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे सेम साइज की. 1, मैं दोनों चीजें बता रही हूँ. 2, ले कोई और कलर ले लीजिए. 3, let me take 4, and let me take one more. 5. So I have these strips, but they are unequal. So I'm going to make them equal. जैसे हेयर ड्रेसर बाल को कट करता है, हम भी अपनी स्ट्रिप को कट करके हेयर ड्रेसर बनेंगे. सो आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, डिफरेंट कलर की ले सकते हो, कोई भी कलर की ले सकते हो. तो अब मैं इसको कहाँ लगाने वाली हूँ, मैं यहाँ लगाने वाली हूँ नेक के पास. नेक के पास लगाने के लिए I'm going to put this and I'm going to stick my strips. So one strip, थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे. I'm telling you it's winters. You need to hold it. My second strip. My third strip. Let me see कितनी strips आ रही हैं. I think मेरे में तो 4 ही आ रही है. So my 4 strips are here on the unicorn. आपको लगता है अगर इसे छोटा करना है तो हम छोटा भी कर सकते हैं. Okay. So my unicorn is ready to fly. So it's you can hold your unicorn. You can have a a ribbon here. Okay, so I have time, so I want to color the legs of my unicorn. Okay, so you can add, again I'm telling you, you can add cotton balls here. उसको बड़ा बड़ा करके भी लगा सकते हो. ओके, नहीं तो स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस. So now we have time. So I'm going to take, let me take orange color. Okay, I have this orange brush pen. You can use any color from this world. So I'm going to fold it and I'll just show you what I'm going to do. So I'm coloring the legs like this. I thought, let me make my unicorn colorful because you people are really, really colorful from different states, but still we are here on the same platform, that's podium. So we all are different, but yet we all are here together. So one, and the back side. Don't forget the back side of the unicorn. You can stick paper. You can color it.
please, I want to see beautiful, lovely unicorns, small, big, family of unicorn, and photographs अच्छी जगह खिंचवाएंगे, background का ध्यान रखेंगे, yes, okay, and सुंदर सुंदर हम बनाएंगे, swig it, yes, so like this. Okay, so you can open the ball and you can even color the first part of the face. We have time, right? So we can just color it nicely. So let me see, can we do? Yes, I'm going to use the colors. You can color it or you can leave it. Okay, one side and the other side. Now something very important is missing. Who is going to write in the chat box? Something is missing. Something is missing in my unicorn. Wings. 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 Yes, in my unicorn. Yes. So you can take any color. Again, I'm saying. So let me take blue now because lots of boys were saying, ma'am, blue color, le lo. So I'm taking a blue sheet, a lovely blue, pretty sky blue color. और मेरे को इतनी सारी शीट नहीं चाहिए, मैं उतनी लूंगी शीट जितनी रिक्वायर्ड है. Okay, great. Thank you for reminding me. मैं तो भूल जाती और मेरा यूनिकॉर्न तो कभी उड़ ही नहीं पाता. So I am going to keep my unicorn aside. And what about the wings? Moksha, just see, don't go. Okay, so for the wings, I'm going to fold the sheet because मुझे कितने wings चाहिए? 2 wings. So मैंने बहुत बार समझाया है, जब हमें दो चीजें एक जैसी चाहिए, when we need 2 things, so we're going to fold the sheet. So everyone knows how to make wings. Butterfly के wings जैसे होते हैं, हम लोग वैसे बनाएंगे. So we will write number 3 and simple wings like this. Very simple. I just wrote bada sa number 3. So now I'm going to cut this. आपको जैसे और wings आते हैं आप वैसे भी बना सकते हो. Okay. So the wings are ready. But हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको कट करेंगे. Okay. So I've got 2 wings. You can outline it. You can make some dots. You can make put some cotton. All up to you. मैं नहीं बता रही. आज सब अपनी मर्जी से करेंगे. Now where to put the wings? This is what I'm going to tell you. So I'm going to put my wings here. Okay, like this. तो ये कैसे लगाएंगे? हम wings को साइड से फोल्ड करेंगे. I am again showing wings को नीचे से फोल्ड करेंगे और इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और जहां मैंने फोल्ड किया है वहां मैं फेविकॉल लगाने वाली हूं. So I am using फेविकॉल on both the folded parts and I'm going to stick the wings. So where is my unicorn? So I'm going to stick the wings here. उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे
like this, ताकि ये जल्दी, इसको तो बहुत जल्दी हो रही है उड़ने की. And the other wing is here. Okay. So the other wing this side, and yes, my unicorn is ready to fly in the sky. So my unicorn is ready to fly in the sky. Okay. So make your unicorns, make your unicorn family, and please send it to us on Podium Facebook page or Insta page, and you can hang it. Okay, आप hang करेंगे तभी ये ऐसे चलेगा, और जब हवा आएगी तो ऐसे उड़ेगा, और आप साउंड भी लगा सकते हैं. जल्दी Can I see your unicorns? Can I see your unicorns? It's a colorful, bright unicorn flying in the sky. And you know what? Winters are coming. So you can have lots of unicorns hanging from the roof. And you can have your own unicorn, flying unicorn. So let's have little music and let's fly with our unicorn. Do you want to hear music, kids? Do you want to hear music? Okay, name is Meko. What should I keep his name? I will keep Sophie, the unicorn. So let's have a flying unicorn, and it's flying. Wow, I can see. I can see lots of unicorns. Fazia, I hope kids enjoyed the show. So kids enjoyed the show, right? So now we can just see each other's unicorn. And this was really fun, isn't it? So let's enjoy the music. Let's enjoy the music. And See, ma'am, mine. Anvi. yes, बोलने की जरूरत है. Please tell how Ma'am, show me a unicorn, please. So let's fly. Enjoy the music. So let's, my flying unicorn. Wow. I live on this planet called Earth. So you can have a show also, fantasy show. Okay. So very nice.
I loved it, and it's time to say bye-bye. Please send your entries on Facebook, Podium Facebook page, and on Insta page. I'm going to see whose unicorn is looking good. I'm going to send something nice, some smiley or a star, and let's see how many children get more stars. Okay, where do I live? Srishti is asking, I live on this planet, okay, called Earth. So I'm from this planet. I'm not an alien. So I hope you enjoyed the class, and it's time to say bye-bye and see you soon. And happy winters to everyone. Bye and take care of yourself. It was a nice class. Thank you, because you were nice today. You were not asking too many questions. That is why the class was really nice. So it's time to say bye-bye, and I can see lots of unicorns, lots of unicorns. Yes, lots of unicorns. Bye.